एक औरत अपनी ज़िंदगी में कई किरदार निभाती है। बेटी, बहन, दोस्त, बीवी, पर सबसे अहम किरदार है माँ का। Mom, where are you? आ गए जनाब. How was the match? It was awesome, Mom, but we lost. It's okay, beta. हारना जीतना is not important. What is important is that you tried. अरे मॉम, आप क्यों ये सब करती हो? आपको डॉक्टर ने मना किया ना ये सब करने के लिए? आप आइए मेरे साथ। अरे कितने बार बोला कि आप ही की तबीयत खराब होगी, लेकिन आप है कि सुनते ही नहीं। आप ही के भले के लिए कहता हूं ना माँ, आप रेस्ट कीजिए। If I will not cook and clean, who will do it? और आज तो मेड भी नहीं आई. मॉम, यू लीव दैट टू मी, ओके? आप मुझे ये बताइए, आपने दवाई ली क्या? नहीं ना माँ, मैं जानता था। आप क्यों अपनी दवाई टाइम पे नहीं लेती हैं? आप क्यों अपना ध्यान नहीं रखती हो माँ? आप तो सबका ध्यान रखती हो, लेकिन आपका कौन ध्यान रखता है? अगर तबीयत खराब हो गई तो आप प्लीज अपना ध्यान रखा करो। एटलीस्ट दवाई तो टाइम पे लेनी चाहिए ना। ये लीजिए। माँ, आपके लिए एक सरप्राइज है। आप गेस कीजिए इस साल स्कूल टीम का कैप्टन कौन है? अंकित. अरे नहीं माँ, उसे तो खेलना भी नहीं आता। राहुल. राहुल? अरे वो तो सब्स्टिट्यूट है माँ। तो फिर सैम होगा. आपको तो अपने बेटे पे भरोसा ही नहीं है ना माँ। मैं तो कैप्टन हो ही नहीं सकता। तुम. हाँ माँ, मैं हूँ इस साल का कैप्टन। क्या बात है, मेरा छोटू तो स्कूल टीम का कैप्टन हो गया. छोटू? माँ, रियली? आपको पता है ना मुझे वो नाम पसंद नहीं है। ऑल माई फ्रेंड्स एट स्कूल टीज मी विद दैट। अच्छा, ये सब छोड़िए, आप लोग आ रहे हैं ना मैच देखने? Obviously. मेरा मतलब आप तो आ रही है ना मैच देखने? Don't worry, I'll get your father also. आप हर साल यही कहती है, बट माँ, डिड डैड एवर टर्न अप? ऐसा नहीं है बेटा. It's not. ऐसा ही है माँ। माई फ्रेंड राहुल, his father comes to his every match, even though Rahul is only a substitute. My friend Ankit, his father takes him to vacation whenever possible. Are you forget about Ankit and Rahul, ma? My friend Akash, his dad is coming on stage to tell everyone how proud he is of his son. पर पापा तो कभी नहीं आएंगे ना माँ। उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि मैं कौन से क्लास में हूँ। क्लास तो छोड़ो, उनको तो ये भी नहीं पता होगा मैं कौन से स्कूल में हूँ। Sameer, it's not like that. It's just that he's too busy with work. Busy? What busy, ma? All he does is just drink and drink. It's not like that, Sameer. He does love you, and he also cares about you. Nahi, ma. You know how sad I feel when I see my friends celebrating with their fathers? No, ma. You won't know. Papa doesn't love me, ma. All he loves is his drink. जब देखो तब पीते रहते हैं। Sameer, do you think like that? Don't you have good clothes to wear? Don't you have food to eat? Don't you go to a good school? Who do you think is providing you all that? Ma, all the fathers take care of the children and provide for the family. तो ये सब करके पापा ने कौन सा बड़ा काम कर लिया? Sameer, haven't I taught you anything? You have to respect him. He's your father and accept him however he is. समीर, समीर। हाँ पापा। आज मुझे समझ में आ रहा है कि माँ हम दोनों को करीब लाने की कोशिश क्यों करती रहती थी। हाँ समीर, योर स्पॉन्सर लेटर।
Sign it. I'll drop it in the post office. अरे पापा, मैं कर लूँगा. It's okay, beta. Don't worry. I'll drop it. ठीक है, I'll get it. Did I miss something? क्या बोल रहे थे जनाब? कुछ नहीं, बस ऐसे ही. Did you meet the doctor? I asked you something. Yes, I did. Dinner is ready. Shall I serve you? So that I can eat and just get lost in my room? I'll have it a little later. You had? No. Acha, listen, I've got the report card for Sunil. He's okay in all of the subjects except maths. So, would you be able to help him out in that? And also, he's selected as a captain of the football team and we are invited this Saturday in school. You're coming, right? Oh, you go. It's okay if one of us go. Why, Gautam? It would be nice if both of us go and support him. That's why I said, you go. Now go get me a drink. How much can you drink? Malvika, please stop arguing with me and go make me a drink. I'm really stressed right now. And what about me? Do you even know what I'm going through? मैं किस दौर से गुजर रही हूँ, क्या बीत रही है मुझ पर? For you, it's only drink, drink and drink. You don't care about us. You have distanced yourself from your family. Your son doesn't even want to talk to you. Malvika, you think I have nothing to do but teach this boy and go to school and cheer? Do you really think I have the patience to come home and spend time with this boy who doesn't even respect his father? Do you have any idea what I'm going through at work? I'm at the verge of getting fired. On top of all this, you expect me to come home early and spend time with this brat? No, you're there for that. I'm giving you everything. You can take care of him. And with your condition, I just can't take it anymore. Fine. I'm going to pour my own goddamn drink. Don't talk to mom like that. क्या बोला? क्या बोला तुमने? Gautam! Malvika, stay out of this. He deserves one. Don't you dare raise your voice in front of me ever again. समय इंसान को सब कुछ समझाता है. समय रहते इंसान समझ जाए तो अच्छा है, वरना उस समझदारी की अहमियत ही क्या है जिसके पास समय ना हो. She was diagnosed with cancer. Terminal stage. मैं सोचता था कि वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन नहीं. That is why she wanted to see her family live like a family should, together and always happy. She did want to live, not because she was scared of death or she loved life so much, but if she had left us behind, I would not even look at my father. बाप और बेटे का रिश्ता बहुत नाजुक होता है और एक औरत के लिए अपनी पति और बेटे के बीच के फासले को दूर करना एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता. समीर, समीर, कहाँ हो तुम यार? समीर, I always wanted to spend time with my father, but I forgot. Even he was going through a lot. अगर वो हमें साथ में देखती तो खुश होती. She is still happy to see us like this. चलो चलो, चाय ठंडी हो जाएगी. और तूने अभी तक सही नहीं किया.